Hello student, today we are going to see our second chapter cascading style sheet and JavaScript. Cascading style sheet, it is known as a CSS. Cascading style sheet or CSS allow you to specify styles for the visual elements of the website. The detail of how to display the document is known as a style. Style specifies the appearance of particular page elements on the screen. Keeping the style separate from the content help us to avoid duplication in coding, use the same content with a different style for a different purpose, easy maintenance of code. Means what is CSS student? It is mainly used for designing purpose. It is used to well design your web pages. With the help of CSS we can easily make better design, or we can apply a particular theme for our web pages. For example, if we'll take an example like if we want to show the common theme for each page, that time CSS is very useful. For example, we have seen in like Facebook, right? फेसबुक जैसे कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक में कैसा है कि मोस्टली जो उसके सारे पेजेस, आप उसके किसी भी पेज पे जाओगे तो उसका जो बेसिक थीम है ब्लू एंड वाइट कलर का, राइट? जो टॉप में उसका ब्लू कलर का जो थीम है और जो मेन सेंटर वर्क एरिया है वहाँ पे वाइट कलर थीम है, तो उनका जो प्रॉपर थीम जो हर एक पेज पे सेम मेंटेन रहता है वो बिकॉज ऑफ CSS होता है। वैसे ही जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो राइट, जो फ्लिपकार्ट का ऊपर जो उनका फ्लिपकार्ट लिखने का स्टाइल है, फ्लिपकार्ट वर्ड का स्टाइल है, फिर उनका जो वो ब्लू कलर का थीम है पूरा ऊपर वाला हेडिंग पार्ट, राइट, और फिर बॉटम पार्ट जो उनका फिक्स पार्ट वो रहता है थीम, वो थीम अप्लाई करने के लिए हमें CSS हेल्पफुल होता है, राइट? For example, if we want to use a particular theme for our web pages, like if I want to use heading tag, right? So for heading tag I have decided for each page heading should be the same, like heading style, heading font, heading detail should be the same, it's look like same. So that time this CSS concept is useful, right? We'll see in detail. Like syntax of CSS, the syntax of CSS consists of special symbols known as a rules. A CSS rule has a two main part: one a selector, and second one or more declaration. The selector is the HTML elements on which you want to apply the style, okay, and declaration consists of a property associated with the HTML elements used in a selector and its corresponding value. The general syntax of CSS is defined as below, like CSS curly bracket property, then colon, then value, and curly bracket over. So this selector means सिलेक्टर ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आप वो पर्टिकुलर थीम और पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे H1 इज़ व्हाट, इट इज़ अ हेडिंग टैग, राइट? सो आई वांट टू अप्लाई फॉर कॉमन थीम फॉर ऑल हेडिंग टैग, लाइक फॉर H1 टैग। दैट मीन्स हर पेजेस पे अगर मेरे वेबसाइट में सपोज 10 पेज है तो हर 10 पेज पे अगर कहीं पे मैंने H1 टैग यूज़ किया है तो मुझे वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने देखिए प्रीवियस इमेज में हमने देखा था, 1 मिनट, हाँ, सी यहाँ पे अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग। CSS क्या करता है, CSS में क्या होगा, एक बार आपने किसी स्टाइल और फॉन्ट के लिए जो भी कोड लिख दिया है एक पर्टिकुलर हेडिंग के लिए, वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका एक बेनिफिट है, राइट? नेक्स्ट, यूज़ द सेम कंटेंट विद अ डिफरेंट स्टाइल फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, राइट? सेम चीज़ हम मल्टीपल चीज़ों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैनी टाइम्स यू कैन यूज़ द सेम थिंग इफ वंस यू विल मैनेज, सो इट इज़ वेरी ईजी टू maintain of a code, right? So again, so this is your syntax: selector, property, and value. Selector means element on which you want to apply the CSS. Then the property is which property you want to change, like color, style, font face, then alignment, etc., right? Here they have taken like property as a color, and the value means that color value, which value you want to give, that is a comes in a value, like H1 tag heading H1 as a selector,
color is a property, green is a value. So this is a important syntax of CSS. एग्जाम में भी पूछा जाता है what is CSS, then what is the main rules of CSS, okay, and what is selector, what is declarator, etc. So हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, okay, and what is a property and what is value, that we have to remember. Next I will show you the how it's actually look like and when we get this option of CSS in a composer software. See students, in a composition toolbar, कंपोजर जब आप ऑन करोगे उस पर कंपोजिशन टूल बार जो है मेन्यू बार के बाद वहाँ पे आपको ये एक सी एस एस का आइकन मिलेगा. सी हियर राइट टॉप साइड पे यहाँ पे छोटा सा आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन इट, this dialog box will be appear open. Okay, in this dialog box, see here there is a few tabs like general, text, background, border, box, lists and oral. Okay, so we'll see one by one. Side by default it will open with a general tab, right? In a general tab there are 4 radio buttons like style applied to all elements of type, then style applied to all elements of class, style applied to an elements with a specified id attributes, and custom style rule. Okay, and then after there is one drop down box. Inside it you can able to select multiple elements from here, then create style rule button there is. Okay, so first हमें क्या करना है, स्टाइल अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप्स पे ही रहने देना है बाय डिफ़ॉल्ट. ओके, मीन्स हम जो एलिमेंट्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं इसीलिए हमने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया है. ओके, वैसे ही नीचे रेडियो बटन का अलग अलग उसका पर्पज़ होता है, टास्क होता है. हम पहले स्टाइल अप्लाइड ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप सिलेक्ट करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन बॉक्स जो नीचे है उसमें से हम हेडिंग टैग पे अप्लाई करने वाले हैं, तो H1 टैग अप्लाई कर दिया. ओके, जो हमने आगे पढ़े थे, देर आर टोटल 6 हेडिंग टैग, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. H1 इज़ अ बिगर वन, तो हमने H1 टैग को हेडिंग बनाया है तो H1 सिलेक्ट किया एंड क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करूँगा. जैसे वंस वी क्लिक ऑन दिस क्रिएट स्टाइल rule button, it will redirect you. Okay, it will start creating this like a CSS. Okay, CSS design. Then text tab will give you the option to modify the text or apply a style on a text. See here the 2 radio buttons is there in a font family, unspecified and predefined. Okay, predefined is option which is already predefined. Unspecified, if you will select, you will be able to select the option. Okay, see this font family means Arial, Helvetica and sans serif. These are the font face name. हर फॉन्ट का जो अलग अलग नाम होता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा. किस पे, अपने हेडिंग टैग पे. क्लियर. फिर वैसे ही देखो नीचे फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉन्ट साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो. फिर उसकी लाइन हाइट है, फिर कलर है, आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. फिर राइट साइड टॉप में देखो फॉन्ट वेट, we can able to select our font weight like bold, italic, underline or something like that. Then font style, it is also font bold, italic or some italic and some other option will be there. We'll see it once we perform the practical, then it will show you, then I will show you the everything. Okay, so this is a main this is a second dialog box of text tab. Then case, uppercase and lowercase, you are able to change capital or small letter from here. You can able to apply alignment also, center, left, right, etc. If you want to apply this text decoration like overline, underline, blinking line throughout, this kind of style you can apply from here. Okay, then next, that is a background tab. Now background tab, you are able to change the background color of, or you can apply the background image for that particular heading background. Okay, then next, that is a border. You can with this option you can able to change the border of your हेडिंग टैग. ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया है टॉप, सी जस्ट डाउन टू दिस ऑप्शन, ऑल 4 साइड्स यूज सेम बॉर्डर स्टाइल. वो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक रहना चाहिए जिससे आपके वो चारों तरफ के बॉर्डर पे वो अप्लाई हो पाएगा. देन स्टाइल शुड बी डैश्ड, यहाँ डैश्ड होगा, डॉटेड होगा, देन सिंपल लाइन होगा. that option we can select. We can also able to change the color of that, we can able to apply the color of the border. We can able to apply the width
of that border. So many formatting option is available in a CSS. That's why CSS is very useful, student, and it is very popular. It's what it's do, it is used to separation of the documents from the presentation. Okay. Then it is easier coding and maintenance. It is site control. uh, it is used to control the site. Okay, all pages in the site looks the same. That is a main purpose. Like with the help of CSS, we are able to apply a common theme for all pages, so your site will look like decent and same. Okay, then it is useful for, it is with the help of CSS you can able to create a rich design layout for your web pages. Okay, and it is more basically supported with all browser. So it is very useful, and it can be used with both like HTML and XML pages. Okay, so this is what the CSS. Okay, so once you will finish all this like border, then after box, list and oral, we'll see it later on. No need of see seeing now. See, then once you press on general tab, all that you have decided, all that you have selected, all will be written here in a general. ये जो पूरा ये कोड है CSS का, तो ऐसे आप मैनुअली भी कोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रैग एंड मतलब क्लिक एंड वाला ऑप्शन है, हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऑप्शन कर लिया। बट हम जब मैनुअली जब कोडिंग करते हैं HTML में, जब हम ये कंपोजर सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते, तो उस टाइम पे हमें ये CSS का कोड ऐसे मैनुअली लिखना पड़ता है। देखिए उसमें लिखा हुआ है बॉर्डर स्टाइल, डैश्ड, बॉर्डर कलर, जो हमने कलर सिलेक्ट किया था, फॉन्ट फैमिली, एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, जो भी सिलेक्ट करोगे, फॉन्ट वेट यहाँ आएगा, टेक्स्ट आएगा, मतलब जो भी कुछ आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर। देन सी दिस इज़ अ फाइनल लुक ऑफ योर CSS। जो भी चेंजेस हमने किया था, तो वो देखो ये हेडिंग टैग है, उसमें मैंने आशादाम वर्ड लिखा है, तो उस पर वो हमने ब्लू कलर सिलेक्ट किया था, डैश्ड जो था बॉर्डर वो आ गया है, फॉन्ट का स्टाइल आ गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो अब ये पूरे वेबसाइट पे मैं कहीं भी H1 टैग लिखूँगा ना, तो एग्जैक्टली ऐसा आ जाएगा, राइट। means wherever we want to use this, we are going to use this heading tag na, H1 tag, it will apply the same theme, same style for each and every heading tags. That means no need of writing again and again, or no need of creating again and again this same CSS file. Okay, so now second topic is JavaScript. Student, JavaScript is mostly used for validation purpose, right? The web pages designed using HTML were static and could not be changed after the browser rendered them. While using JavaScript, a web pages no longer remain static but can include coding that allows interactivity with the user, control the browser and dynamically create HTML content. Netscape developed JavaScript. Netscape is a one company who developed this JavaScript. Okay, it is also known as a lightweight programming language. It is a case sensitive language, so it is very useful, and it is used to validate your page. Means, what is the meaning of validate? Validate means with the help of JavaScript we are able to protect our web page. Means we can apply protection on our web page, जहाँ पे यूज़र कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाता। अगर यूज़र कुछ भी रॉन्ग डेटा इनपुट करेगा तो हम तुरंत एरर थ्रो करेंगे। जब तक यूज़र कंप्लीट करेक्ट डेटा नहीं इनपुट करता है, हम उसे सबमिट नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। इट इज़ अ डिज़ाइनर प्रोग्रामिंग टूल। ओके, देन नेक्स्ट, JavaScript can be placed inside the body or head section of the HTML page, but generally we are using we are applying JavaScript in a head section because there are less line of coding in a heading tag, so it is easy to find it. Okay, body tag में already बहुत सारा कोड रहता है, तो हम जनरली हेड टैग में ही लिखते हैं, बट यू कैन राइट इन अ बॉडी टैग और अ हेड टैग. ओके, द स्क्रिप्ट टैग tells the browser to interpret all the text between the script tag as a script. जो भी स्क्रिप्ट टैग HTML, ये जो हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं,
it is applied in a script tag. Okay, you have to open first script, then script tag open, script tag close. Inside a script tag, that validation code will be there. Like we can write a validate form, then curly, then round bracket open, inside that curly bracket, then after we write the exact code of JavaScript. Okay, so whatever comes in between this script tag, it will consider as a JavaScript code, so browser can run it. Okay, using JavaScript, the form is generally checked for the following things: has the user left any required field empty? So if user left anything empty, then we error will be thrown, error will be throw. Okay, ब्राउज़र वहाँ पे एरर थ्रो करेगा. सो यूज़र को अंडरस्टैंड होगा कि ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है तो मुझे अप्लाई करना है. क्लियर. वैसे ही हैज़ द यूज़र एंटर्ड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, हैज़ द यूज़र एंटर्ड द वैलिड डेट, हैज़ द यूज़र एंटर्ड अ टेक्स्ट इन द नंबर डेटा फील्ड. So that is this kind of restriction, you can say, this kind of restriction we can apply to our page, so user will not able to make mistake. So once we apply this, we will get all correct data from the user. If user try to enter wrong data, it will not accept by our browser, it will not accept by our form. Okay, so there is a good database we can able to collect or we can able to maintain. Okay, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर यूज़र रॉन्ग ईमेल आईडी डालेगा तो वो भी वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. फिर वहाँ पे अगर वैलिड डेट नहीं सिलेक्ट करेगा तो वो भी एरर थ्रो करेगा. फिर अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल नंबर के जगह पे, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर के जगह पे उसने नाम एंटर कर दिया, नेम के जगह पे कहीं पे उसने नंबर लिख दिया, तो इन ऐसी सारी जो चेंजेस और करेक्शन होते हैं वो जावास्क्रिप्ट संभाल लेता है. ओके, नेक्स्ट. See, one syntax is there: document write hello dear student. Okay, so this is what, this is a one syntax which is very useful. Document is called a part of object, write is one type of method of form, then of JavaScript, and hello dear student, this is comes in a round bracket double quote. It is like a simple message or text, you can say. The semicolon at the end of this statement is optional in a JavaScript. Okay, यहाँ पे आप end of statement में semicolon देख रहे हो. So in a JavaScript it is optional, but you know student, we have to make this habit, because this is a good programming habit to apply a semicolon at the end of the line. In when we learn actual Java programming, C++ programming, so that time this is the good programming habit. So हमें अभी से habit रखना है. Okay, next. The semicolon used as a mark of separation rather than termination. Okay, next. JavaScript elements. Function alert. What is function? A function is a reusable block of code that perform a particular task. A function is defined by the keyword function, and the block of code is written inside the curly bracket. What is function? Function is a specific block of code which perform a specific task. For example, if I want to apply like addition of two numbers, so once I will create the function of a addition, right? So whenever I required, I can I just need to write that function name like add. It every time it perform the same task. So that's why it is called, it is a reusability of code. Means once you create your function, you can use it any time of that particular line of code or particular pages. Okay, then for creating function we have to use a function keyword. Okay, I will show you while we perform the practical. Okay, then alert is what? It is also one type of default function available in JavaScript. JavaScript provides some inbuilt, default means inbuilt function such as a alert. The alert function takes the text and display it an alert box. The function will be executed by an event or when it is called inside a source code. Okay, it is when it's come like a event. Otherwise we can call it by doing a coding also. A function can be called anywhere from within the source code. The use of return statement will stop the function from executing and return the specific value. Okay, next. Events. There are many events. The interaction between the user and the web page causes the browser to generate an event. Means user
और ब्राउज़र का जब भी इंटरेक्शन होता है तो वो ऑटोमेटिकली एज अ इवेंट काउंट होता है. ओके. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द यूज़र डज समथिंग एन इवेंट टेक प्लेस. अगर यूज़र कुछ भी करता है, लाइक इफ़ यूज़र प्रेस अ कीबोर्ड की, ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर वन event. If user click on the mouse button, or if user scroll the mouse, if user can like change the place of pointer, all these terms, all this action is considered as a event in a computer. Okay, a computer functions. Okay, so in a JavaScript events, in when the user does something, an event take place. Following table shown some JavaScript event. There are some few mentioned here, important JavaScript events. Let's see one by one. Like abort, blur, click, change, error, focus, load, reset, select, submit and onload. Abort is loading of image is cancelled. अगर हमारा वेब पेज खुल रहा है उस टाइम पे अगर हमने इमेज को बंद कर दिया सडनली लोड होते होते, तो उस टाइम पे दिस एरर विल बी शोन. Okay, abort error. Then blur error. Elements such as a radio button becomes inactive. Sometimes we are unable to select a radio button. That time this error will be called, this event will be called click. User clicks on the form elements. Once user click on any form elements, it will created. This events will be called. Then change, then error, then focus, then load. Focus elements such as the bottom become active. Then load, then reset, then select, then submit. User submit the form. Once user click on the submit button, this events will be called. Okay, so all this you can say action is known as a events here. Clear? Then if statement, we have already learned this if statement. What is the if statement? It is known as a conditional statement. When it comes to compare two things, or when it's come to give some condition to your task, to your action, that time we use this if statement. You must be familiar with a conditional statement. If the conditional statement if is used to change the flow of the program. The if statement evaluates an expression to validate specific condition. If the condition is true, then the program enters in if block and execute the statement inside it. Okay, means for example, if I want to like give one condition here, for example, let take example, if a is greater than b. Okay, if a is greater than b, then after I want to, if it is a is greater than, then you have to give a alert message like a is bigger one, a is bigger number, a is greater number. Otherwise it will show the it will run the next, that is like a whatever we have written in a else statement. Okay, that next condition will be clear. So when it's come to apply a condition, that time this if condition is used, if statement is used. Okay, next, browser object model, it is also known as a BOM. Okay, mostly in a MCQ question it will ask, to control the web browsers window or the web page, we use the browser object model. All browsers are split into different part of object that can be accessed using JavaScript. This part are known as the browser object model. See student, at the right side this image is given, we'll explain it and see it. Like window, it's considered frame, parent, self and top. This window again divide in a main three parts: history, document and location. Okay, for this point we see documents. Again this document contain this three things: link, form and anchor tag. Anchor, so डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, लिंक, फॉर्म एंड एंकर. अब ये लिंक और एंकर टैग क्या होता है, जहाँ पे हम हाइपर लिंक यूज़ करते हैं, राइट. हाइपर लिंक, इट इज़ व्हाट, हाइपर लिंक इज़ व्हाट, it is a clickable text, you can say. Once you click on that particular text, it will redirect to you one place to another place, or it will redirect to you another page. Like हम जब भी वेब सर्च करते हैं नेट पे, तो हमें गूगल पे सर्च करते हैं तो नंबर ऑफ लिंक्स जो ब्लू कलर के खुलते हैं उसको हम एंकर टैग बोलते हैं या तो हाइपर लिंक बोलते हैं. क्लियर. नाउ दिस डॉक्यूमेंट contained a form. Okay, form again contains some important elements like radio button, text area, button, text, checkbox, password, reset, select, option.
Okay, these are what, these are the elements of form tag, and it is very important. When we perform a practical, we are going to create, with the help of it, we are going to create a registration page. Okay, so radio button, text area, button, text, checkbox, password, reset, select, option, etc. Clear? So this all comes in a windows. Window is what, it is a main, you can say it is a operating system. Okay, and all this chain will be connected with a window, so that's why we can say it is a major object model or browser object model. Okay, and then one more thing, is none. Is none is what, it is a function, it is also inbuilt function, you can say. None stand for not a number. Okay, and it is compulsory, it should compulsory written in a small is n capital, again a n capital. सो दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्मेट, ऐसे ही लिखोगे तभी वो एग्जैक्टली वर्क करेगा. क्लियर? और ये जो दो ब्रैकेट है उसके बीच में आप जो भी चीज़ लिखोगे उसको वो चेक करेगा कि ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो नंबर है कि नहीं है. अगर वो नंबर मतलब अगर वो नंबर नहीं है तो वो ट्रू देगा, अगर नंबर है तो वो फॉल्स देगा. सी हियर इन अ डाउन, टू वर्क विथ अ न्यूमेरिक वैल्यू, जावास्क्रिप्ट यूजेस inbuilt function, or you can say built-in function or default function. It returns true if the value is not a number, and false if the value is number. For example, is none 1 2 3, so it will return false as the value is number. Okay, if we write is none bracket में double quotes में hello, then return true as the value, and hello is not a number. Okay, so this is a is none function, and it is useful when we apply, when we are going to apply a validation, when we are going to apply a when we are going to check this like a numbers, phone number, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे फील्ड को जब भी हम वैलिडेशन देंगे उस टाइम पे हमें ये फंक्शन यूज़फुल होगा. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा. हम इसका प्रैक्टिकल सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.